आज हम मैथमेटिक्स का कौन सा एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So arithmetic progression. So before going to this chapter, first I want to tell you what is, you people must be saying now you are in 10th, this chapter you have not started in 9th or 8th or 6th 7th, but 10th arithmetic progression, that means what it is you may feel, but it is nothing, very simple sums, and here mark fetching is there, and you will, all the marks will be in your hand, in your fist. So what is it? So from the childhood we are learning, from the childhood we know what is arithmetic progression, but only the name we don't know. But in childhood what we have, what ma'am used to give us, so even I also studied, even you also, when you were in class 1 or class 2, that time what ma'am says, after learning one number system, counting number, after that she gives you do from backward counting, after that then skip counting, like this 2, 4, 6, like this she will give 1 dash, 2 dash, and like that she will give, fill up the blanks. So in this case what you are doing when you are in child, so that time what you are doing, okay, 2 and 4, so what is the difference between 4, then remove 2, then 2 is there, so from 4 if you add, in 4 if you add 2 you will get this number 4, 5 and 6. Yes, then I will go on adding two numbers. So 6 plus 2, 6 is 7 and 8. So here is 8. Then 8, after that what will come? Again 2 fingers, 9 and 10, isn't it? Then again 10, again you will do 11 and 12, like that you used to do. So this is what? This is nothing but arithmetic progression. Understand? It is nothing but arithmetic. The same thing we are learning here. So each one, what is this? These are the, each one, each number is known as what? Terms. Okay? Each number, this number is a one term, this is one term, this is one term, like that name is given terms. In arithmetic progression we shall learn few terms that you should know. So here terms. So first, what you will say first term, second one you will say second term, third one, third term, fourth one, that I shall teach you later on. First we should know in arithmetic progression what are the things coming. So first, sequence and series. Sequence and series. Series means what? Any, you can write the numbers, whatever may be the order, you can write the number 2, 6, 4, like that you write. So if addition of the series, what? 2 plus 6 plus 4, that is what? 12, isn't it? You can arrange 4 plus 2 plus 6, this is what? 4 to 6, 6, 6 to 12. Any way you arrange it, it comes the same, but it is in, so, but in sequence means what? So the number should be arranged in either a pattern, one pattern, so that the first number, if you want to get the second number, so you have to add a fixed number to get the next number. Okay? So now arithmetic progression means what? So you understood what is series means? The sum of all the sequence, this is the sequence, the things are added like that, this is 2, 4, 6, this is the sequence, because the difference, next number you are adding with a fixed number, that is 2, 2, 2 you are adding, so this is sequence. Series means what? The sum of this sequence is known as series. Suppose you add it, see, this way you add, you are getting 12, this way also if you add, you are getting 12. That's why this is what the difference between this sequence and series, what? It can be added in either way, but in sequence there should be a definite fixed number to get the other number. Now let's see in AP. AP means what? Arithmetic progression means in all sequence, the sequence, so what all the number should be in a either descending order or ascending order, and the difference should be
same. I mean the fixed number, the difference should be fixed. So that is known as what? Arithmetic progression. This is ascending order. So you can say this is a arithmetic progression because the difference between this number to this number is what? 2. From here to here you are getting 2. From here to here getting your 2. So you are getting 2. So that's why it is known as what? This is arithmetic progression. So this difference, what you say? Common difference. The common difference means between any two terms, this term and this term, the difference terms, you know, I told you here, the terms means 2 is one term, 4 is one term, 6 is one term, 8 is one term. The difference between these two terms is what? 2, and the difference between these two terms also 2. That means common difference is same. That's why you will say that it is a arithmetic progression. Suppose I will write 6, 6, 6, 6. This is also a arithmetic progression because what is the common difference between these? 6 minus 6 is what? 0. Here also 6 minus 6 is what? 0. So what is the difference? From here to here the difference is 0. So what? From 6 minus 6 is 0, 6 minus 6 is 0, 6 minus 6 is 0. So we are getting the same. Here we are going on adding here. Here we are going on adding. Okay, so here also the difference 6 plus 0 is 6, 6 plus 0 is 6, 6 plus 0 is 6. So the first term is, so now another thing, suppose in arithmetic progression there are two types of, in short we are saying what? Arithmetic progression को हम AP कहते हैं in short. So in AP there are two types of APs. One is finite, another is infinite. Finite means, suppose you here you see this is the finite because this is ending over here. But suppose I will write 5, 10, 15, 20, like this I have written. So this is what? The numbers are not what? Countless, isn't it? Infinite. So we don't know this has gone up to what? We don't know. That's why you say that infinite AP, because the difference is same, because 5 plus 5 is 10, 10 plus 5 is 15. Yeah, 10 minus 5 is 5, 15 minus 10 is 5, 20 minus 15 is 5. The common difference is same. That's why we say it is AP. But what type of AP? This is not what? It is not limited. It is unlimited terms are there. That's why it is infinite AP we are saying. Infinite. Okay. Then finite AP, finite is what? Finite AP is there is a end. Suppose 3, then 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 1 is 7, dash, 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 like that, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 or 100, whatever it may be. So the here, what the last term, this is the last one. So it is ending over here, that is it is a limited, here the limited terms are there, therefore we can say it is a finite. Another example you see, 2, 4, 6, 8, dash, 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 50. So here it is ending. So the last term is ours what? 50. This last one is known as last term and the first one is first term, but it's starting with 2 and the difference is same and ending at 4. That's why it is a finite AP. Okay. Now you got it. So now that. So now I told you in pattern way what I said. Pattern means nothing but what? That you can, any pattern, you see this is a pattern but in our daily life also there is a pattern. Suppose the what ladder is there. So here what the steps are, the difference, this difference is same height. Here suppose 5 inches or 15 inches, then this is also 15 inches and this is also 15 inches, like that difference. So it is a pattern. Similarly leaves also, some leaves are like this. So this is what? Alternate way the leaves are arranged, isn't it? Alternate ways are arranged. So this is a pattern. Similarly some leaves are like opposite. Here is one leaf, here is one leaf. You see like this. This is
like this, isn't it? Opposite. So this is not, this is known as pattern. So now everything in AP we have arranged in pattern, and the difference between two consecutive numbers are same. That is known as what? Common difference. Now we have done common difference. What is it? Now let's know about the terms. So first is, this is 5 and 10 and 15 and 20, like this it has gone up to 50, let us say. So now these, the first one we will say that A1, that is means first term. First term, what first term को हम क्या कहेंगे? A1. Then second term is what? A2. Third term is what? A3. So how first term is what ours? 5. So just you write the 5. Then second term how you are getting? What you are seeing, what is that? What is there? 10 is there. What is the difference between 10 minus 5 is 5. That means second term is at what? 10. So third term here 15. So these are the terms, and like this it is going on and ending where? Here. This is known as the last term. So instead of saying last term, what you will say? This is nth term. Nth term is what? 50. Our last term is what? 50. Nth term. Got it? So first term, second term, third term, fourth term, like that it is going on up to 50. So this 50 is the last term. For last term we will say that nth term. Suppose, so like suppose if it is like that, 5, 10, 15 and 20, this much only I will say. So here is what? First term, second term, third term, fourth term, last term. Okay. So now how many terms are there if I ask you? So here how many? Here I didn't ask you because I will tell you there is a formula. With that formula we can find out how many terms are there. First we should know, you see, what is terms. So how many terms are there? Count it. 1, 2, 3, 4. There are how many terms are there? 4 terms. This is n. N is what? Number of terms. Okay. N if he asks, he is asking what? Number of terms. मतलब कितने terms हैं, कितने numbers हैं, 5 से लेकर 50 तक कितने नंबर है निकालो कहेगा. वो तो फॉर्मूला है, हम बताएंगे. और लेकिन अब हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज n. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. व्हाट इज an? दिस इज nth टर्म. मतलब लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म ये है 50. कभी कभी लास्ट टर्म नहीं देगा, पूछेगा nth टर्म इसका निकालो, तब आ जाएगा हमारा जनरल टर्म आ जाएगा. वो हम करेंगे बाद में. तो फिर अब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू A2 माइनस A1. ये है कॉमन डिफरेंस. मतलब हमारा सेकेंड टर्म क्या है? 10 और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 1. सो 10 minus 5 is 5. This is our common term, common difference. Okay, sorry, common term नहीं, common difference, right? So common difference. तो अगर ये AP है या नहीं पूछेगा, suppose he will ask you whether it is AP or not. Okay, this is 5. Then let's see A3 and A4, or A2 and A3 we can see. So A3 minus A2 is our common difference because A3 this A2. Okay, बड़े से छोटे को माइनस करोगे तो A3 हमारा क्या है? यहाँ 15 माइनस 10 दैट इज 5. राइट. तो अब आपको क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ पॉजिटिव आने से ही होगा क्या कॉमन डिफरेंस? नो, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव आल्सो. ऐसा अगर मैंने दिया, सोचो ये है 6, फिर 3 दिया, फिर 0 दिया, तो अब क्या है? A2 हमारा क्या है? ये वाला हो गया, और A1 क्या हो गया? A1 इज 6 हो गया. A2 हमारा क्या है? 3 हो गया. तो कॉमन डिफरेंस निकालो कहने से हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1. व्हाट इज अवर A2? A2 इज 3 माइनस A1 इज 6. सो 3 माइनस 6 इज -3. कैसा? -6
+3। अब ये दोनों साइन अलग है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 - 3 जाने से क्या होगा, 3 होगा, विच इज़ ग्रेटर, माइनस वाला ग्रेटर है, तो हम इसका साइन -3 डालेंगे, इसलिए -3। तो माइनस भी आ सकता है, AP भी माइनस में भी हो सकता है, -5 माइनस ऐसी -5, सॉरी यहाँ लिखूँ -5, -10, ऐसा करके भी माइनस में भी AP हो सकता है। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स कैन बी AP। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव। ओके, द कॉमन डिफरेंस कैन कम 0 ऑल्सो। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल कराया था, 6 6 6 या 3 3 3 3 लेने से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है। अब हम फॉर्मूलाज क्या है सीखेंगे। यहाँ कुछ नहीं बेटा, एक ओनली थिंग, 2-3 फॉर्मूला ही है, वो 3 फॉर्मूला है, तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज आप कर लोगे। एक सम में एक है, और यहाँ nth टर्म कैसा निकालना है, लास्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इतना सीख लिया तो आपका हो गया। और पीछे से गिनना, फ्रॉम द एंड फाइंड द 10th टर्म, या 10th टर्म फ्रॉम द फ्रंट, ऐसी करके यही सब। तो अब हम फॉर्मूला सीखेंगे, क्या है, nth टर्म निकालने के फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D। आपको मालूम है, हमने कहा है व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो an is what, an is our last term, isn't it? an is the last term निकालने का फॉर्मूला। a क्या है, a is our first term, and you know that d is what, this is our common difference, right? ये हो गया फर्स्ट। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, वो तो फर्स्ट वो ये हो गया कॉमन डिफरेंस फार्मूला A2 - A1, ये है कॉमन डिफरेंस फार्मूला, ये तो हो गया, nth टर्म निकाल दिए। तो अगर हमारा क्या है, सम निकालना है, सम के लिए Sn = n/2 × 2a + n - 1 × D। अगर इनका सम निकालो पूछेगा तब क्या क्या, विदाउट हम 5 + 10 = 15, 15 + 15 = 15, 30, 30 + 20, ऐसा हम कर करके कितना जाएंगे, क्योंकि व्हेन स्टैटिस्टिक्स में हमारा आता है लॉट ऑफ, अगर पॉपुलेशन कैलकुलेशन करो इंडिया का, या दिल्ली का पॉपुलेशन कैलकुलेट करो, या आंध्र प्रदेश का करो, तो इतने संख्या को कैसा करेंगे, दे विल डू दिस लाइक योर स्टेप डिविएशन मेथड, उसमें से भी कर सकते हैं, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स में आएगा। तो वहाँ सम करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से भी वी कैन फाइंड आउट द सम। सो नाउ वी नो Sn means sum of the terms, Sn is what, sum of the terms. Okay, now A we know, A is the first term, n we know, n is the how many terms, number of terms, D is the common difference. So from this on the whole, how many formulas, first is what, first is how to find the common difference, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1, ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला हमारा हो गया nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के an = A + n - 1 × D। अगर हमको n नहीं मालूम, ये सारे मालूम है, n a n ये 3 चीज़ मालूम है, अगर n नहीं मालूम तो इस फॉर्मूला से ही हम nth टर्म निकाल सकते हैं, या लास्ट टर्म निकालो कहने से अगर n दे दिया तो लास्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसा, हम धीरे धीरे सम्स करेंगे। थर्ड हमारा हो गया सम, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × D। ये फॉर्मूला कैसा आया हम बताएंगे बाद में, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला के ऊपर पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिपेंड है। तो ये 3 अगर हो गया तो आपका पूरा, थोड़ी क्या है जो स्टेटमेंट सम्स है, थोड़ा लैंग्वेज का उल्ट पलट होता है। जैसा लीनियर इक्वेशन में, जैसा जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम क्या कहते हैं, पढ़ के मैथमेटिकली
एक्सप्रेस करते हैं. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो सेम, मैथमेटिकली यू विल एक्सप्रेस देन सॉल्व द सम्स. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द व्हाट फॉर, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, तो फिर कल से हम सारे सम्स करेंगे, लेकिन थोड़ी सी सम कर लेंगे. कौन सा? 5.1 का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 है. अच्छा, तो 5.1, तो 5.1 में क्या है, बहुत सारे स्टेप्स दिया. इसके बाद मैं आपको लास्ट टर्म कैसा निकालना वो सारे सम्स में फर्स्ट नेगेटिव टर्म का जब सम्स आएगा तब बताऊंगी. ठीक है, तो अब ये भी इसके ऊपर हम डिपेंड करके इसके ऊपर से ही सम करेंगे. सम वाला भी बाद में करेंगे, सिर्फ दो फॉर्मूला से. कौन सा? a2 माइनस a1, ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस. दूसरा फार्मूला क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये दोनों फार्मूला कुछ सम्स करेंगे. हो जाने के बाद फिर हम चलेंगे सम एंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना, या फ्रॉम द एंड फाइंड द 10th टर्म या 12th टर्म, जो भी कहेगा वो हम बाद में, वो 2-3 फॉर्मूला है, वो छोटा सा, वो कुछ नहीं है, वो हो जाएगा. तो अभी 5.1 में वो क्या क्या है, इसको पढ़ो. ही सेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सिचुएशन को इसको कुछ दे दिया, ये सिचुएशन को पढ़ो. पढ़ के डज द लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन, मतलब ये जो तुम सिचुएशन पढ़ के जो निकाले हैं, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है या नहीं, वो तुमको सोचना है. ठीक है, तो हम फर्स्ट हमको पता चलना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा नहीं. हमको मालूम, सपोज मैंने दे दिया 2, 2, 5, 7, 9, 10, 14 दे दिया. मैं कहूँगी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, बताइए. तो आप क्या करोगे? अच्छा, हमारा a2 क्या है? 5 है. a1 क्या है? 2 है. ओके, a2 क्या है? कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू व्हाट? a2 माइनस a1. नाउ कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू a2 क्या है? 5 लिख दिया, 2 3, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या? 3 आ गया. सो नेक्स्ट भी वही है या नहीं हमको देखना पड़ेगा. अब यहाँ इसमें क्या है? a3 इज 7, a2 इज 5, देन कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू व्हाट? a3 minus a2, a3 is what? 7 minus a2 is 5. Okay, now 7 minus 5 is 2. और आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको यहाँ ही पता चल गया. अरे ये दोनों का डिफरेंस क्या आया? 2 plus 3 is 5. यहाँ 5 plus 2 is 7. और यहाँ लेकिन 7 plus 2 is 9 है, लेकिन 9 प्लस यहाँ, फिर 9 प्लस यहाँ है, हो जाने दो, नो प्रॉब्लम. बट फर्स्ट हमारा ये दोनों में से जब पता चल गया, हम कहेंगे दिस इज नॉट. आफ्टर दैट ऑल्सो इट कैन नॉट बी. सपोज ये लेट अस से दिस इज 9 एंड दिस इज 11 एंड दिस इज 13. सपोज 9, 11, 12 and here the difference is 2, 2, 2 is coming, isn't it? So but here is not a2 minus a1 is 3, a3 minus a2 is 2. So this is not an AP. So what you will write? a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. Therefore it is not an AP. समझ में आ गया? ऐसा हम डिसाइड करेंगे. सिमिलर इसके ऊपर बहुत सारे सम्स है, वो करेंगे. और सिमिलरली अगर सोचो ये अगर है तो ठीक है, अगर 2 है, 4, 6, 8, 10 ऐसा दिया हुआ है, दिस इज एन AP or not. So what you will do? These two you will see, 4 minus 2 is 2, 2 plus 2 is 6, here 2. So ठीक है, इसके बाद हमारा ये जरूर AP है. ठीक है, therefore it is an AP because the common difference is same. ठीक है, सो अब वही कह रहे हैं 5.1 में, वो क्या कह रहे हैं? आप सिचुएशन का पढ़ो, सिचुएशन को पढ़ के आप डिसाइड करो ये AP है या नहीं. देखो अब ये कह रहे क्या है, सोचो एक वेल है, इसमें 5.1 में ही है. सपोज एक वेल है, वेल में क्या है कह रहे हैं
फर्स्ट डिग करने के लिए, फर्स्ट सोचो 2 किलोमीटर डिग करने के लिए 100 रुपीज़ ले रहे। आफ्टर दैट एक एक मीटर जो डिग करेगा, है ना, ये हमारा ग्राउंड है। ओके, नाउ लेट अस से दिस इज ए ग्राउंड। सो ये यहाँ फर्स्ट ये 2 किलोमीटर के लिए 100 रुपीज़ लिया, बाद में 50 करके लिया। तो यहाँ ये एपी है या नहीं, तो फिर तुम क्या करोगे, फर्स्ट 2 किलोमीटर को कितना लिया, 100 ले लिया, फिर बाद में वो कहेगा इसके लिए 50 रुपीज़ लेगा। अगर सोचो यहाँ तक ही, अगर यहाँ 3 मीटर में अगर को पानी निकल गया, तब क्या क्या, ये 2 मीटर प्लस 1 मीटर 50, दैट इज हाउ मच, 150 हुआ। फर्स्ट वो कितना लिया, ये 2 मीटर, फर्स्ट मीटर के या 2 मीटर के लिए कितना 100 लिया, सेकेंड के लिए 150 लिया, थर्ड के लिए क्या लेगा, तो दिस 50 प्लस 50 100 प्लस 100 इज 200, फिर उसके बाद वो लेगा 250। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस 150 माइनस 100 इज 50, 200 माइनस 150 इज 50। लेट्स सी, A2 माइनस A1, 150 माइनस 100 that equals to 50. Similarly, A3 minus A2 that is 200 minus 150 that is 50. So say therefore it is an AP. So ऐसा ही है हमारा 5.1 में जो स्टेटमेंट्स दिया है उसको पढ़ के हम एनालाइज करके कॉस्ट वॉस्ट सारा निकालेंगे। यहाँ जैसा हम कॉस्ट निकाले, पहला ही इसके लिए 100 लिए, दूसरे के लिए 150 लिए, तीसरे के लिए यहाँ ये इतना तक वो खोद दिया, तो यहाँ हो जाएगा 100 लिया, यहाँ पर 150, यहाँ फिर 550 ले लिया, 200 लिया, फिर यहाँ तक अगर करके रोक दो बोनस 250, यहाँ तक करके रोक दो कहने से 300 लिया। तो हम वो सिचुएशन को हम ऐसा करके डाल दिए, फिर उसके बाद देखे AP है या नहीं। सो इससे हमको पता चल गया ये AP है। तो दिस वे वी हैव टू डू द 5.1। सो बच्चे आज का इंट्रोडक्शन क्लास ही रहा, कल करेंगे 5.1 का हर एक क्वेश्चन। ओके, सी यू, बाय।